हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश। और आज हम कर रहे हैं 2022 का अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और ये है, आप देख सकते हैं, क्लास 10th इंग्लिश का। मैंने सेट बी पिक किया है। मोर और लेस सेट ए बी सी तीनों ही सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ही उसमें कुछ चेंज होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सो आई एम गोइंग टू पास दैट नाउ। लेट्स टेक अ लुक। अब सेक्शन ए देखिए। सेक्शन ए में आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। लुक एट द वर्ड लिमिट, सॉरी द नंबर्स। 7 मार्क का एक पैसेज है और एक 8 मार्क्स का पैसेज होता है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे हम सीधा क्वेश्चंस में जाएंगे। आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब आपको मैं आंसर बताने से अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है ना। सो व्हाट डिड वुल्फगैंग्स एल्डर सिस्टर मैरियन लर्न एट अ वेरी यंग एज। तो आपको डेफिनेटली वुल्फगैंग है एक कीवर्ड, मैरियन लर्न एट अ वेरी यंग एज। अब आपको ये चीज़ क्वेश्चन में ढूंढनी है। सो लेट्स टेक अ लुक हाउ टू फाइंड इट। सो मैरियन है, यंग है, एंड देन शी वॉज ओनली 3 years ओल्ड बाय देन। तो आप देख रहे हो एग्जैक्टली आंसर नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, बट यू हैव टू फिगर इट आउट, ठीक है ना। एंड वी सी दैट पियानो इज समथिंग दैट इज कनेक्टेड विद इट। सो वी राइट टू प्ले पियानो एज द आंसर। ठीक है, वो थी 3 years की बात ना। एट द एज ऑफ 5 उसकी अचीवमेंट क्या थी। सो अगेन यू गो बैक and here your keyword becomes at the age of 5. By the age of 5 he began to compose beautiful pieces of music on the piano. So your answer, beautiful pieces of music, right? So I'm not going to waste any more time on this. Wolfgang's father realized when he heard. तो कैसे उन्होंने, it's a pity and all that. So write this answer, ठीक है ना। Then he started composing. I think this is like a repeated question. Look at this. See, question he repeat कर दिया. Started composing beautiful pieces of music, right? Okay. When he saw concerto written by, तो उसका reaction क्या था? तो इसका reaction था ये, ठीक है। तो I have marked that. And gifted. तो gifted का मतलब होता है talented. तो ये definitely आपको नहीं मिलेगा, और इसके लिए आपकी वोकैबलरी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको अपनी स्ट्रांग करनी है वोकैबलरी, तो आप रीड करिए एंड लर्न न्यू मीनिंग्स, लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे। आई नो थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ट्रस्ट मी इट हेल्प्स अ लॉट। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज पर, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ होता है, और ये होता है 8 मार्क्स का, ठीक है। So passage number 2, that also is similar, only conductor ने lady को कैसे help किया, how did the conductor help the lady get off the bus? So your answer is right over here. Yeah, the conductor called her respectively and helped by lifting her children luggage one by one, right? So that's the answer. Next one is over here. So again I've just marked, why did tears start rolling down the conductor's cheeks? Tears started rolling because nobody had count. अब इसमें हम थोड़ा सा ना चेंज कर सकते हैं। कैसे? मी की जगह हम कर देंगे हिम, ठीक है ना, हिम। ही, टीयर्स स्टार्ट को कर दो आप स्टार्टेड, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फ्लोइंग डाउन द कंडक्टर्स चीक्स, चेक्स लिखा हुआ है, देखो ज़रा, चीक्स होगा, चीक्स। आई थिंक इट्स अ मिसप्रिंट, बट देन because for the past 30 years nobody had complimented him till then, ठीक है। हम यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कर देंगे, and he was very happy that day, ठीक है। Why was the lady confused and worried? Lady was confused and worried because she did not know where exactly her bus stop was. So this is an MCQ, and this also is the MCQ. Coming to this one, we don't require to do a big service to ए का हमने आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, टू क्रिएट हैप्पीनेस अराउंड अस। एंड सेकेंडली बी का है, अ सिंपल कॉम्प्लीमेंट कैन गिव अस सो डैश टू द रिसीवर, सो मच जॉय, ठीक है, टू द रिसीवर। ओके, नाउ प्रेज्ड का मतलब कॉम्प्लीमेंटेड, फार अवे का मतलब रिमोट। सो अगेन यू नीड टू रीड टू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। Now moving on to part 2, which is section B, writing, और ये है 25 marks का। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 mark का, and it is a message writing। थोड़ा सा लंबा था while I was reading it, but then
इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन है, इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस गुप्ता एंड सुनील, ठीक है, और आपको लिखना है एक मैसेज उसकी सिस्टर सोनू के लिए, ठीक है। तो मैसेज राइटिंग है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैसेज लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, और क्योंकि मैसेज सोनू के लिए है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सोनू के लिए, ठीक है, राइट अ मैसेज फॉर हर, यानी कि फॉर सोनू, ठीक है। तो आप लिखोगे डियर सोनू। अब इनकी क्या बात हुई है, बात हम शुरू करेंगे यहाँ से। एंड डियर सोनू, देयर इज एन अर्जेंट मीटिंग इन द ऑफिस, मॉम। अब आई, क्योंकि मिसेस गुप्ता ने मैसेज लिया है तो आई इज मॉम, सो मॉम वोंट रीच होम बिफोर 9 PM। मैसेज लिया है सुनील ने, तो इसीलिए वो बोल रहा है मॉम नहीं पहुंचेंगी 9 बजे तक। एंड फादर ऑल्सो कॉल टू इन्फॉर्म दैट ही वुड बी लेट, ठीक है। अब मॉम ने ये भी बोला कि तुम दोनों को अपना होमवर्क करना है फिनिश, तो बोथ ऑफ अस, यू नहीं, बोथ ऑफ अस हैव टू फिनिश होमवर्क एंड स्टडी, एंड मॉम विल कैरी डिनर ऑन हर वे बैक होम, ठीक है, एंड दैट्स ऑल। तो ये मैसेज है और ये मैसेज हमें लिखना है, उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे सुनील। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर मैसेज, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ राइटिंग है, 7 मार्क का है, क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, मार्क स्कोरिंग है ना। And here we are given 3 situations. We have to choose one of them and write a paragraph on it in about 100 words. पहला question है, one sees children working as help in shops and in industries. The rights of child are abused, especially in developing countries. Child labor cannot be abolished unless there is free and compulsory education. Write what you feel about child labor in a paragraph. कितना simple question है, child labor, इतना सारा तो आपको matter question में ही दे दिया है, right? So child labor is something that is going on in developing countries like India. One sees children working as help and all that, ठीक है। अब आपका क्या ओपिनियन है चाइल्ड लेबर के बारे में? Do you want there should be free and compulsory education? Right, of course you do. What kind of education do you like? Right, इसके साथ आपको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, राइट। तो आप इसकी एडवांटेजेस और अपना ओपिनियन अब जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू 100 लॉन्ग वर्ड्स। कमिंग टू नंबर 2, इट इज़ अ कॉमन साइट टू सी पीपल वेस्टिंग वाटर, ठीक है। अब वेस्ट कर रहे हैं लोग पानी, आपको अपना ओपिनियन देना है इन अ पैराग्राफ हाउ टू सेव वाटर, राइट। अब आप वाटर कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, इसमें कंजर्वेशन मतलब वाटर को सेव कैसे करना है, नॉट टू वेस्ट वाटर। इसमें आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर सकते हो, आप टैप्स को खुला नहीं छोड़ना है, डू नॉट लीव टैप्स ओपन, राइट, यूज़ ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, एंड स्पेशली वाइल ब्रशिंग, वाइल बाथिंग, डू नॉट टेक अ शावर, इंस्टेड यूज़ अ बकेट टू बाथ। एंड पानी एक रेयर कमोडिटी बन गया, हाउ पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग वाटर, हाउ इट इज़ सो स्केर्स एज अ कमोडिटी, मतलब पानी वैसे तो बहुत इजीली अवेलेबल है लेकिन पोर्टेबल वाटर इज़ नॉट दैट फ्रीली अवेलेबल। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कोविड से रिलेटेड, ठीक है, वो तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ड्यू टू कोविड-19 रेज, the world has lost a large number of its people. The economy of nearly all countries had a setback and education suffered the most, with schools and colleges remaining closed. As no medicine is there for the disease, people have to follow the norms set by the doctor and government. Write down the importance of these. कितना simple question है, पूरे कोविड टाइम में हमने यही सब तो किया है ना, कि क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, कवर योर स्नीज करते हुए यू हैव टू कवर योर नोज एंड योर माउथ, देन यू हैव टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, एंड यू शुड अवॉइड गोइंग टू प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जाना चाहिए, राइट, and stay at home as much as you can, go out only when it is required, and if it is important then you can take classes on an online mode, right। और अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, अदरवाइज मतलब क्या होगा, what will be the repercussions of if you don't follow such norms,
right? क्योंकि COVID it's such a communicable disease, it can spread very easily. So आप खुद इन्फ्लिक्ट हो जाओगे इस डिजीज से, राइट? सो यू कैन मेंशन ऑल दैट. इफ यू आस्क मी व्हाट इज द मोस्ट इजी आउट ऑफ द थ्री, आई थिंक कोविड वाला इज इजी एंड दिस वाटर वाला इज ऑल्सो इजी, राइट? चाइल्ड लेबर वाला थोड़ा सा टिपिकल है बट नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन स्टिल राइट इट. ठीक है, सो ट्राई टू राइट इट. And moving on to the next question. Write a letter to the police inspector of your locality reporting the theft of your bicycle. Now here you really have to know the format of the formal letter. It's a formal letter है ना, formal letter है. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अपना एड्रेस लिखेंगे which is your sender's address, right? Then you are going to put the date. Then you will put the police inspector, the police inspector. Then you will write the police station, which station are you talking about, and then you will mention the place. After that you're going to write the subject, right? Reporting theft of bicycle, ठीक है. उसके बाद dear sir, right? And then with due respect, I would like to bring to your kind notice that my bicycle has been stolen from so and so place, and mention the date, mention the time, mention the purpose basically of writing your letter. In the next paragraph, in para 2, you are going to write about the specifications of the bicycle. Uska make kya hai, uska model kya hai, what is the color of the bicycle, where did you park it, or was it parked or not, was it just left alone, or did it have anything else also, उसमें कोई और चीज़ थी कि नहीं रखी हुई, और कौन से एरिया में थी वो. सो ऑल दोज details which you think are going to be helpful in finding your bicycle have to be written down here. And finally, in the third paragraph, you are going to write the call to action. Call to action का मतलब क्या होता है? So I request you that you will take necessary action as soon as possible and help me find my bicycle. Thanking you, yours sincerely, and then you are going to sign off. Question number 6 है, एक NGO हेल्थ फॉर ऑल ऑर्गेनाइज अ हेल्थ चेकअप कैंप इन योर एरिया. ठीक है, आप हैं दीपक और दीपिका एंड यू विजिटेड द कैंप एज अ जर्नलिस्ट. ठीक है, एंड यू ऑल्सो गॉट योर हेल्थ चेकअप एट द कैंप. आपने अपना भी हेल्थ चेकअप कराया एंड आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इन अबाउट 100 वर्ड्स एंड यू हैव टू मेंशन द पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ योर एरिया, नियर बाई एरियाज, कैसे वो ट्रीटमेंट चल रहा था, क्या रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, क्या मेडिसिन दी जा रही थी एंड दे वर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड यू मे अदर ऑल्सो इंक्लूड अदर टेस्ट डन लाइक ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, विच वर कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो बेसिकली एक आप इसका हेडिंग डाल सकते हैं, फ्री हेल्थ मेला. ठीक है, और हेल्थ मेला फॉर द कम्युनिटी. ठीक है, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स, फिर उसके बाद आप लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखेंगे टाइम, उसके बाद लिखेंगे बाय, एंड हियर यू मे राइट योर नेम, दीपक और दीपिका, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल ऑब्वियसली. ठीक है, फिर उसके बाद आप सारी डिटेल्स, जितना देखो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होता है द बेटर इट इज़ फॉर यू, बिकॉज यू हैव टू इन्वेंट योर ओन डिटेल्स लेस. आप इसको, आपको पॉइंटर्स दे रखे हैं, आप इसमें कुछ नेसेसरी डिटेल्स इन्वेंट कर लीजिए. But one thing that you have to take care of is you have to first write the heading, write the format, and second is you have to use passive voice. You have to use reported speech in your answer. ठीक है, जितना आप इस चीज़ को फोकस करेंगे उतना आपकी ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी है वो ठीक रहेगी, प्लस आप कंटेंट इसमें से रेलेवेंट कंटेंट बना सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट 500 पेशेंट्स को टेस्ट किया गया या 100 पेशेंट्स को टेस्ट किया गया एंड ब्लड प्रेशर कॉमन प्रॉब्लम निकली या ब्लड शुगर वाज अ कॉमन प्रॉब्लम रिपोर्टेड बाय द पीपल, राइट. सो लाइक दिस यू कैन मेंशन, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन योर ओन रिपोर्ट, जैसे आपने भी अपना हेल्थ चेकअप कराया, आपको क्या प्रॉब्लम निकली, राइट. एंड यू शुड ऑल्सो मेंशन दैट पीपल शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, देयर हेल्थ मोर सीरियसली,
right? Now coming on to section C, that is grammar, and it is going to be of 30 marks. First question है connectors का. You are already provided with some linkers in the box, yet, or, and, when, because. Meaning आपको clear होना चाहिए. Yet का मतलब लेकिन, और मतलब या, and मतलब और, when मतलब अगर या जब, and because मतलब क्योंकि. She used the cup, she kept it for washing. She used the cup because she kept it for washing. The farmer was weeping, the crop was lost. When the crop was lost. ठीक है, and make sure that you don't capitalize them. इनको आप lower case में कर देंगे. She was depressed, yet she didn't approve of it. Right? So 3 marks pakke, 3 marks, very simple. Now coming to WH question words. Now this question type is added recently and it was not there previously. तो अच्छा है, स्कोरिंग है, 6 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे. आप आंसर पहले देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे. माई नेम इज़ नीरव, तो ऑब्वियसली व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने व्हाट लिख देना है. ठीक है. आई बिलोंग टू मुंबई इटसेल्फ, तो होम टाउन. आप इसमें व्हाट इज़ योर होम टाउन भी लिख सकते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ वेयर, क्योंकि वेयर जो है वो जगह को सिग्निफाई करता है. ठीक है. नाउ again you may want to write what dishes can you cook, that's grammatically correct, but the correct answer is which. जब भी हम choice करते हैं तो हम which use करते हैं. So for choice we use which. ठीक है. Now join the hotel, आप in a week's time, आप कब join कर सकते हो, so when. So when is the correct answer, right? Now Mr. Mehta, अब हम किसी person को बोल रहे हैं तो who, right? So who, whenever you have a person, that is your answer. ठीक है. He is shifting to Delhi dash you leave his employment. So आपने ये employment क्यों छोड़ी, तो why, right? तो कितना simple है, कितना simple answers है. I hope you've got 6 marks in that, and I hope you get such a question where you can easily score good marks. Moving on to question number 9. Question number 9 आता है reported speech का question. That again is simple. Let's take a look. ये dialogue है माधव and postal clerk के बीच में. तो first statement is Madhav went to a post office and requested the postal clerk to give. me का क्या कर दोगे, him, because वो माधव है, लड़का है. give him a postal stamp. for this नहीं होगा, that हो जाएगा. ठीक है, that letter. ठीक है. she and he wanted to send that to the next village. ठीक है. now she gave him one and said, ठीक है, and said that will का क्या करेंगे, would, that would be ₹5. ठीक है. माधव protested that you की जगह, क्योंकि postal clerk है एंड पोस्टल क्लर्क लड़का है कि लड़की है, शी, तो लड़की है ना, तो शी की जगह हम यहाँ यू की जगह शी लिख देंगे. शी चार्ज्ड हिम, मी की जगह हिम. शी चार्ज हिम रुपी, शी चार्ज हिम नहीं, शी हैड चार्ज हिम, क्योंकि सिंपल पास्ट का हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट को हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में. सो ये बच्चे भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं. शी हैड चार्ज हिम ₹5. येस्टरडे का क्या करेंगे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर. ठीक है, द प्रीवियस डे. फॉर अ लेटर टू, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. द नेक्स्ट विलेज वॉज ओनली शॉर्ट डिस्टेंस अवे. द क्लर्क पोलाइटली एक्सप्लेन्ड दैट इट वॉज अ रूल. ओके, सर कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोलाइटली एक्सप्लेन हो गया है ना. माधव रिप्लाइड दैट he did not believe her and added that he would go to another post office. तो क्या किया हमने, सिंपली हमने टेंस शिफ्ट किया, प्रेजेंट को पास्ट में किया, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में किया, मॉडल्स को पास्ट किया, और हमने थोड़े बहुत ये वर्ड चेंजेस किए जो कि टेंसेस रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं. ठीक है, 6 मार्क्स पक्के. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, and that is complete the following paragraph by filling the blanks using suitable form of verbs given in the bracket. All baby birds are, bear नहीं आएगा, born. ठीक है, from eggs.
ठीक है. While it is in the egg, the embryo, that is the baby bird, gets. आपको आर से ही पता चल जाएगा कि आपको प्रेजेंट टेंस में काम करना है. ठीक है. Gets all the food it needs from the yolk in the egg. Besides food, the baby bird needs to be hatched also. थोड़ा बहुत passive voice है, थोड़ा बहुत present tense है. So the mother bird crouches. Crouches is the right answer. Over eggs to keep them warm. Sometimes the father bird does this. And parents take turn. ठीक है. पेरेंट्स है तो टेक आएगा, टेक्स नहीं आएगा. तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंट टेंस है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी ध्यान रखना है. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो ये थोड़ा सा सिंपल होता है कंपैरेटिवली, बट लेट्स टेक अ लुक. First one has already been done as an example. Global warming is an increase in the average temperature of the Earth's atmosphere. It is caused by the rise in carbon dioxide levels and in the atmosphere, which leads to an increase in temperature on the Earth. Global warming has accelerated due to massive deforestation by man. It is happening not because of a single cause but due to several causes. तो again, अगर नहीं समझ आ रहा तो just go for something called a tukka, but do not leave any question unattempted. That would be my suggestion to all of you. Okay, now this is a passive voice. Question itself is telling us Hari discovered a large apple tree. A large apple tree was discovered by Hari. ठीक है. He quickly climbed the tree. The tree was quickly climbed by him. He picked the juiciest apple and began eating it. The juiciest apple was picked by him and he began eating it. So simple. Look at this, 3 marks. So easy. Now moving on to section D. Let's move on to that. Section D है I have 3 visions of India. तो ये My Vision for India है, APJ अब्दुल कलाम वाला लेसन. ठीक है. अब क्वेश्चन अगेन आपको इतना ज़्यादा फ्रेट नहीं करना, आपको क्वेश्चन के आंसर जो हैं इसी पैसेज में से मिल जाएंगे. सो व्हाट डिड द इन्वेडर्स डू टू द पीपल ऑफ इंडिया. इन्वेडर्स ने क्या किया. The invaders invaded us, captured our land and conquered our minds. First question हो गया, ये वाला first answer है. Next, mention any 2 invaders who came to India and took over what was ours. So here you can mention any of the 2, including the Greeks, the Turks, the Mughals, the Portuguese, the British and the French and the Dutch. So all of them, right? Why has India not conquered anyone? India has not conquered anyone because we respect the freedom of others. This is the third answer. Next one. When did India first get its vision of freedom? India first got its first vision of freedom in 1857 when we started the War of Independence. 4 marks, so easy to score. Right? Moving on to the next part. Now this is from the parrot who wouldn't talk. एंड कितना सिंपल है कि इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि कौन से लेसन में से है. सो द पैरट बैक्ड अवे फ्रॉम आंट रूबी बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू बी किस्ड बाय आंट रूबी. नेक्स्ट इज जीजाबाई डिड नॉट बिलीव द लेटर टू बी जेन्युइन बिकॉज शी डिड नॉट ट्रस्ट औरंगजेब. गांधी जी एंड हिज रिलेटिव स्टार्टेड स्मोकिंग बाय कलेक्टिंग स्टब्स ऑफ सिगरेट्स थ्रोन अवे बाय अंकल. ये स्टीलिंग एंड अटोनमेंट का था. अब आते हैं वन ऑफ द क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स. सो 5 मार्क का क्वेश्चन वाले हैं. Okay, why did Neema learn about the neem tree? What did Neema learn about neem tree from her grandfather? इसमें पूरा आपको विलेज फार्मेसी क्यों कहा जाता है नीम को. उसकी इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो एयर कूलर है, पेस्टिसाइड एज अ यूज होता है, इंसेक्ट रिपेलेंट है, एंड इट हैज़ अदर स्किन केयर प्रॉपर्टीज. इट इज़ गुड फॉर द स्टमक, इट इज़ गुड फॉर अल्सर्स, इट इज़ गुड फॉर keeping malaria away, that purifies the air. So सारी चीज़ें आप इसमें mention कर दें. The best thing that would help you is if you write it in at least 5 pointers.
आप 5 पॉइंट्स में अगर इस बात को एक्सप्लेन कर दें, एक पॉइंट लिखें एंड देन यू एक्सप्लेन इट, you write another point, then you explain it, right? So that's going to fetch you marks easily. Next question is, how did Kondeba's life change from a beggar to a small businessman? Very unpredictable question. ये question usually नहीं आता है. ऐसा होता है कि उसने उस बच्चे की जान कैसे बचाई, right? तो ये वाला question usually नहीं आता है, but then आ गया तो करना पड़ेगा. But you still have to do one of it. I think you would go for village pharmacy, but then अगर नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं. इसमें आप बता सकते हो कि कौन सा इंसिडेंट हुआ था जब उसने एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी. So you can mention about the incident when he saved the life of a little boy named Arvind. Then he was awarded with some money and he also got fame. And at that time he was a beggar. He used to beg. And then you can also mention that how Mumbai was very generous with the beggars. And then after he received his money, after he received that money, he realized that he should start his own business. So he did that. And ultimately he became a small businessman from a beggar, and he started leading a peaceful and a contented life. And he was also satisfied that he did not have to beg, because he did not like begging at all, right? So again, this answer can also take you to 5 marks if you mention all the relevant details. Fine. Now moving on to the next question. This is a poem, and this is from the poem The Truth. Name the objects that can physically cause harm to us. So it is sticks and stones that can cause physical harm to us. How do objects cause physical harm? Objects cause physical harm by breaking our bones. ठीक है, हमें कैसे, how का मतलब कैसे हमें physical harm करते हैं, तो हमारी हड्डियां तोड़कर, ठीक है. And they also break our skin. So they break our bones, they break our skin. तो दोनों बातें लिख देंगे आप इसमें. Next is, what type of words are compared to ghost? Ghost कौन से words को कहा गया है? तो words that haunt us are compared to ghost. And how can words hurt a person? So words can hurt a person by causing emotional trauma, injury, and so basically it is to do with emotional unhappiness that can hurt people. So words, once said, can hurt people, right? They can be very emotionally disturbing, and they also cause something that cannot be repaired. तो कहा है ना इस पोएम में कि जो फिजिकल इंजरी है वो तो ठीक हो जाती है, बट द इमोशनल इंजरी एंड the setbacks that you receive emotionally from people through their words, that cannot be healed. Okay, next question is question number 17. You have to do 2 out of the following 3 questions. First one is, what did Kezia's father do when he saw his daughter was frightened? Again, unpredictable question है. केजिया के फादर ने क्या किया जब उनकी बेटी डर गई थी? So probably the girl had a nightmare. So he picked up the little girl and put her in his lap and soothed him, right? So this is what you are going to mention. Why did Lord Rama value the squirrel's work? Lord Rama considered each being, be it human or animal, to be equal. And he also considered that each labor has a dignity. He considered no work is big or small, be it done by a large monkey or done by a small squirrel. So he considered that it is the love for him that matters and not the kind of work that the being is doing for Lord Rama. So it is the love that matters. ठीक है, तो ये हो गया, ये भी हो गया. नेक्स्ट, वेयर डिड मदर टेरेसा ओपन होम? अब वेयर वाला है तो अगर नहीं आता तो ठीक है, आप यही दोनों कर लो, बट अगर आता है तो the answer is, she opened her first home for the dying in Kalighat, Kolkata, India, in a dharamshala. Again, fact based question है, आता है तो ठीक है, otherwise these two are fairly simple ones. Right, now moving on to the next question. You have to do you have to answer all of them in 1 or 2 sentences. Okay, now the poem A Prayer for Healing is an appeal to heal the earth. Why does the earth need to be healed? Heal करना ही क्यों है? क्योंकि people have damaged the earth in different ways, and it is now required that we find ways that can sustain us, that can, you mention the 3 R's: reduce, reuse and recycle. That will help boost up your answer. And so it is not a big answer. 2 marks का है तो इतना आप लिख सकते हैं 1 or 2 sentences में. Second,
9 gold medals क्यों दिए गए थे? Why were 9 gold medals given for the 100-yard dash? So 9 gold medals were given because all the 9 athletes reached the finishing line together, right? And I don't think there is any need to mention that incident because the answer would become very long. But since the question is very simple, even if you answer it in one sentence, you would still get 2 marks for it. 19th question. तो इसमें आपको क्या करना है, MCQ है, इंडियन वीवर्स का है. रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड किस कलर का था? ब्लू कलर का था. विंग्स ऑफ अ हैल्सियन वाइल्ड, सो बी इज द करेक्ट आंसर. माई ओनली क्राइम, ए चाइल्ड प्लीड्स द एडल्ट्स टू स्पीक अबाउट पीस, लव एंड फ्रेंडशिप. And the next question is, read the extract given below and answer the questions that follow. One day she was kept indoors with a cold. ये केजिया वाले लेसन का है, the little girl, right? So one day she was not allowed to go outside. Why? Why? Because it was one day she was kept with a cold. ठीक है, तो there was cold outside. Why did the grandmother advise? What did the grandmother advise? उसने क्या advise किया grandmother ने? Grandmother ने advise किया कि father's birthday was next week and suggested she should make a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो ये भी simple है from the text itself. Next is, what did the little girl do with the double cotton? So the little girl laboriously with the double cotton stitched the 3 sides. So simple. What problems did she face? The problem was she looked for scraps, and what she did was she had to face the anger of her father, who got upset because she had used his important papers which she thought were scrap. राइट वो स्क्रैप ढूंढ रही थी, बट उसको लगा कि ये स्क्रैप हैं, बेकार के पेपर्स हैं, इसलिए उसने उन सबको उस पिन कुशन में अंदर स्टफ कर दिया. एंड दे एक्चुअली वर इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर एंड दैट मेड हर एंग्री. Right? So very simple again, 4 marks pakke. And that's all for this video. I hope you have understood. See, my only idea is that you know how to solve the paper, not this paper, but any paper that you can get. So all the best, prepare well, and good luck. Bye.